वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एंड साइंस क्लासेस बाय यार मोहित में सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन इज दैट व्हाट वुड हैपन इफ प्लेटलेट्स वर एब्सेंट इन द ब्लड। डेफिनेटली हमारा क्लोटिंग नहीं होगा। अंडरस्टूड। एक्सप्लेनेशन देखना है। द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी वन हेल्प ऑफ द क्लोट ऑफ ब्लड एट द टाइम ऑफ इंजरी। In the absence of platelets, the process of clotting will be affected. The platelets play the important role of coagulating of the blood. No blood coagulation would take place in the absence of platelets. This would be dangerous situation in case of an injury. And it would result in the excessive blood loss and can even prove lethal for the person. Okay, ध्यान देना। वो कहता है प्लांट हैव लो एनर्जी नीड एज कम्पेयर टू एनिमल एक्सप्लेन, क्योंकि बिकॉज इसमें डेड सेल होते हैं जिसे बोलते हैं स्क्लेरन कायमा सेल। क्या बोलते हैं? स्क्लेरन कायमा सेल। ओके, तो कहता है प्लांट आर स्टेशनरी एंड एग्जिबिट मूवमेंट इन टर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओनली, दैट इज सेलुलर लेवल। इन एडिशन प्लांट हैव डेड स्क्लेरन कायमा सेल इन मैनी ऑफ देयर ऑर्गन which is turn produce mechanical strength but are not involved in a cellular process. Animal move from one place to another and need more energy compared to plant. Okay, next question. Why and how does water enter continuously into the root of xylem? Because this is cell root are close contact with soil and activity of ion. The ion concentration increase inside the root and has osmotic pressure increase the movement of water from the soil into the root, which occurs continuously. Okay, in the xylem tissue, a basal trachet of the roots system and leaves are interconnected to form a continuous system of water conduction channel. It reaches all part of the plant. At the root, cell is contact with the soil activity take up ion. This creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil. The water therefore move into the root from the soil to eliminate this difference. This means there is a steady movement of water into the root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward. Okay. डिफरेंस बिटवीन हमारा ब्लड और लिम्फ बहुत अच्छे से क्लास में कराया और नोट्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको तुम देख सकते हो और बाद में जिसको डाउट हो तो यहाँ से ही पढ़ लेना। ओके, ध्यान देना। वो कहता है वाई इज ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। पता है, इट हेल्प द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव से इट प्रिवेंट द प्लांट पार्ट फ्रॉम हीटिंग अप। ओके, वो कहता है बहुत ही सराउंडिंग क्वेश्चन है, देखना। इन फोटोसिंथेसिस बेस स्ट्रक्चर आर यूज विच आर प्रोड्यूस एंड विच आर नेसेसरी बट रिमेन अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन। सबसे पहले वाटर चाहिए, प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन होगा, क्लोरोफिल हमारा अनचेंज रहता है। फिर के देख लो। वो कहता है फोटोसिंथेसिस डिफाइंड एज द प्रोसेस यूज बाई प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी ऑफ सन टू केमिकल एनर्जी। वाइल डूइंग सो they use the water present in the root of the plant to release oxygen that is used by the organism. In this process, there are chlorophyll or green pigment present in the leaf, but the amount of chlorophyll remain unchanged even after the process of photosynthesis is over. Okay, next question देखना। What are the end product from during the fermentation yeast? Under what condition a similar process takes place in our body that lead to muscle cramp? तो डेफिनेटली हमारा एनारोबिक प्रोसेस होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, तो होता क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट एज एन एरोबिक respiration is defined as the kind of respiration that takes place in the absence of oxygen. The end product formed during the kind of respiration are ATP, ethanol and carbon dioxide. When such a similar takes place in our body, the muscles get tired easily. So this happens because of the accumulation of lactic acid formed due to anaerobic respiration. Okay, next question. गिव रीजन है वेंट्रिकल हैव थिकर मसल्स वॉल देन एट्रिया। बिकॉज ये हमारा क्या होल बॉडी में पुश करता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो कहता है वेंट्रिकल हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन एट्रिया बिकॉज दे हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज स्लो। बिकॉज हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हैव लो एनर्जी नीड होता है। देन हमारा होता है प्लांट बॉडी हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मैनी टिश्यू, प्लांट डू नॉट मूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट डिफर फ्रॉम दी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। क्योंकि जैसे अपन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में जैसे फिश है उसमें हमारा 2 चैम्बर हार्ट होता है, और जो हमारा टेरेस्ट्रियल में होता है वो 3 और 4 चैम्बर होता है। क्योंकि रीज़न इसका ये होता है क्योंकि हमारा नॉर्मल इसमें कहते नहीं सिंगल सर्कुलेशन होता है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो द हार्ट पंप ऐसे बोल सकते हो। एक्वेटिक वर्टिब्रेट लाइक फिश हैव अ 2 चैम्बर हार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। द हार्ट पंप डीऑक्सीजन टू द ब्लड एंड इट मतलब to the gills and it get oxygenated in the gills. The oxygenated blood from the gills is supplied to the body part. Thus, blood goes only once through a heart in the fish during the one cycle of passage through the body. But in terrestrial organism, heart may be 3 or 4 chamber. Blood get oxygenated in the lungs, and most of them have double circulation. Okay, देखना।
वो कहता है ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर इन मिनरल ट्रेवल फास्टर थ्रू जाइलम एज कम्पेयर टू नाइट, क्योंकि हमारा प्रोसेस क्या होता है, दिन में होता है, फोटोसिंथेसिस वजह से होता है। तो कहता है ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर इन मिनरल ट्रेवल फास्टर थ्रू जाइलम एज कम्पेयर टू नाइट, द वाटर कॉलम इन द जाइलम ट्रैचेड वेसल्स मूव अपवर्ड ड्यू टू पुल जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ बेटर फ्रॉम ऑफ वाटर form of vapor from living tissue of aerial part of plant. The water is lost from the tiny pores called stomata present in the surface of leaf of plant. The stomata are open during the daytime, so transpiration process is faster, and water along with mineral move faster through xylem during daytime as compared to night time. Okay. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, वो कहता है वीन्स हैव वॉल्स वेयर एज आर्टरीज डू नॉट, क्योंकि बिकॉज बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, तो वीन्स हैव वॉल दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, और वॉल्व्स अलाउ द ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट एंड प्रिवेंट बैक फ्लो, तो बट आर्टरी डू नॉट हैव, वैल्यू नहीं है, वॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अभी बहुत अच्छे से करें, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। ओके, जिसको नहीं आता वो इसको यहाँ पे क्या कर लेना, रीड कर लेना। ओके, नोट्स में बहुत अच्छे से करवाए हुए, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी। अंडरस्टूड, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट देखना है, what causes movement of food inside the alimentary canal? Definitely rhythmic contraction and expansion movement of muscles of lining of various organ of alimentary canal pushes the partially or completely digested food forward in the trachea. This rhythmic contraction and relaxation movement is called peristaltic movement. This occurs throughout the gut. Okay, वो कहता है why is small intestine इज मतलब इन हर्बीवोरस लॉन्गर देन इन कार्बीवोरस, क्योंकि हमारा क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है हर्बीवोरस में, इस वजह से वो हमारा क्या होता है, लॉन्गर होती है। तो कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस इज लॉन्गर देन इन कार्निवोरस एज हर्बीवोरस एज ग्रास ईटिंग एनिमल। तो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन of herbivorous help in digestion of cellulose which is present in the grass. Meat is digested easily, so carnivorous have shorter small intestine. Okay, what will happen if the mucus is not secreted by the gastric gland? Definitely हमारा क्या होगा, रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा। समझ रहे बात को, क्योंकि जो कहते नहीं स्टमक वॉल होती है वो रिपेयर नहीं हो पाती, तो ध्यान देना है। वो कहता है mucus is secreted by gastric gland along with the hydrochloric acid and pepsin in the stomach. If mucus is not secreted by the gastric gland, the hydrochloric acid would corrode, मतलब खराब कर देगा the inner lining of stomach and many cause gastric ulcer. Okay, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।